welcome back as Jojo with Shruti, what's She's back. up, Joe? Oh my God, she's back again. Okay. होली वोली खेल के रंग निकल रहा है अब थोड़ा थोड़ा like अब सारा निकल गया. At least my face doesn't look like I'm pink. I was roaming around like Hellboy. Yeah. Like 2 days after Holi. It was That's quite why the cute. delay in our session. No, I didn't mind all that. मेरे को चलेगा. मेरे तो ऐसे like full Oh. ऐसा color. I'm very proud of my Holi colors. So You only said let my face clear up No, a bit. Oh, no, you? no. Oh. That wasn't the Anyway, thing. we are here. We are finally here. Yeah. It's been a little over a month now. I think कब था? हाँ, 5-6 हफ्ते हो गए. Yeah, I think Oh, early सही time पे. early हाँ. Feb. Very So cool. yay, Amitabh, कर्मा का गाना ये अमिताभ. क्या है यार, ये क्यों अमिताभ, like what is the scene here? मैंने थोड़ा सा टीजर देखा and I was like, कर्मा का फेस, अमिताभ बच्चन का बॉडी, एआई का यूज, लेकिन हाइट कहाँ गई? Yeah, कर्मा टॉल, बच्चन I साहब तो saw और भी that. टॉल. तो ये क्या? I really want to watch this now purely to like just watch and say कि एआई ने गड़बड़ करी. कुछ तो भी है उस कुछ विजुअलाइजर तो में. है I ना? also saw and I put it off That's because I'm I very don't want. curious now. I want to watch the whole thing. So wait, you say Amitabh is taller than Karma said he's 6'3" in the drill, and Amitabh Bachchan I've heard is 6'2". I'm saying both are tall. So Okay. AI टिग्गा क्यों है? I That's know. my It's सवाल. very strange. So let's see if that teaser में जो दिखा, which हाँ. I've literally just seen 2 seconds of and I Same, closed it. same. हाँ. वो height में बढ़ता है या नहीं in the full video? Okay. You know, like it could be. Anyway, we don't know. We're just we're hoping. We're hoping. So अरे, चलो देखते हैं. चलो हाँ. So देखते but हैं. let's like, so this is just released, right? This is Obviously. his first drop of the year. Yeah. Okay, cool. Very exciting. So Retro Blood, music produced and vision, written by Karma, composed by Karma, mixed by Zero, mastered by Zero. Okay, cool. Okay. Let's begin. Ready? Yes. 1, 2, 3, play. अमिताभ आज भी फैक है, वे पैसे उठाता नहीं अमिताभ. थोड़ा कर बड़ी बात, भाई तेरा शहंशाह है अमिताभ. अमिताभ अमिताभ जहर का खास दोनों खड़ी पास, तेरे गाने मजाक के फनी पार्ट, बता दे कैसे करोड़पति. मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, शौहरत है, टैलेंट है, इन सबसे मिलने की मोहलत नहीं है. मैं खुश रहती माँ भी है, खुश है तबीयत, बता के है ये कर दौलत नहीं है. एक शादी को राजी है, प्लेट में वसाबी है, कर्मा इस शेम पर वॉलेट नहीं है. तू चाल लेके आना 400 के साथ, घर पे खाने खिलाने की प्रॉब्लम नहीं है. अमिताभ आज भी फैक है, वे पैसे उठाता नहीं अमिताभ. बड़ी बात, भाई तेरा शहंशाह है अमिताभ. अमिताभ जहर का खास दोनों खड़ी पास, तेरे गाने मजाक के फनी पार्ट, बता दे कैसे करोड़पति बनेगा. हाँ बड़ा करोड़पति तू, डोंट वरी, I'm trying to get the toll money dude. ये जल्दी में चल पड़ा अग्निपथ की प्रतिशोध की आग में, जल बेटी चोट की शॉट ले पर मिस फायर मारे, रिप्ले नहीं मिलते तो रिप्लाई मांगे. ये सोप में जीते के मिले इनको जवाब, आप डिप्रेस खाली बैठे डिस्ट्रेस मांगे. मैं रिस्पेक्ट मांगे जो कि मिलती है, इन्हें खुद को पता है ये गिल्टी है, इन्हें खुद को पता है ये कहाँ खड़े होते, इन्हें खुद पता जगह क्यों नहीं मिलती है. खैर अमिताभ आज भी फैक के, वे पैसे उठाता नहीं मैं, मेरे बाप दादा खुददार, उनसे मिलाए सोच मिलती नहीं, हाथ भी मिलाता नहीं. हाथ जोड़ करता हूँ इस काम को सलाम, पर हाथ जोड़ पैसे कमाता नहीं मैं. मुझे सबका हिसाब, मेरी क्या है जगह, तेरे टॉप 10 आने को गाता नहीं. जाने मुझे कितनों ने कितनी सलाई दी, बोला मुझे लिखना ये गाना सब बेकार गाने, इन्हें रोन के चले गए मेरे नाइकी गाने, इनकी सोल पे छपे वजह से एडिडास. मिल जाना बैठ जाना कभी पास, थोड़ी जंजीर दीवार करी पार, करूं फ्राइडे को ड्रॉप करूं शनिवार, छुट्टी बैठाता मैं इन्हें रविवार. अफसोस ब्रो वही है तू वही का वो ब्रो, गो स्लो मशवरा सभी का, लो ब्रो कोड लो ब्रो लो टकीला ना लो ब्रो, कर लेनी नशे साथ, तोड़ फोर्स कोड बोर्ड तोड़ा सभी का, लोड कोड कॉस ब्रो ड्रॉप तेरा फनी था, तू कोट वोट नहीं बकरा तू बली का, तो दोस्त रोज गोश्त नोचते हैं सभी साथ. अमिताभ आज भी फैक है, वे पैसे उठाता नहीं अमिताभ. थोड़ा कर बड़ी बात, तेरा शहंशाह है अमिताभ. अमिताभ अमिताभ जहर का खास दोनों खड़ी पास, तेरे गाने मजाक के फनी पार्ट, बता दे कैसे करोड़पति बनेगा. I like the credit. Oh, cool. उसका कद नहीं बढ़ा. हाँ CG Dawn Studio, पोस्ट प्रोडक्शन बाय, ओके वहां पे है ना सारे. हाँ हाँ. एनिमेशन बाय डी एथेरिक. क्या हुआ भाई साहब, क्या हो गया एनिमेशन में? कुछ कुछ हुआ ना?
Yeah, the थोड़ा Indian सा doodler graphics. पिचक हाँ, गया. हाँ. वो tall and thin को short and stumpy हो गया. In order to fit the screen, is that what was going? No. Skills. है ना? हाँ, नहीं, लेकिन पहले गाने पे बात करते हैं. So, what Okay. did you think of the song? Like, what did you? I really liked the flow. There was a, वो जो bass beat चल रही थी और जो एक certain flow, जो कर्मा वाला flow होता है, basically that I really liked. And then second half के अंदर also there's a certain way, the way he spins the, जो वो lyrics लिखता है, and the way he kind of delivers them. The rhymes So and there is, everything. हाँ, there is like a vibe with it, right? Yeah. But was it the kind which suddenly got me off my chair going, "Oh, वो नहीं हुआ मेरे साथ." Yeah, वो नहीं हुआ. हाँ, वो वो नहीं पहले हुआ. हो चुका है कर्मा के गानों के साथ. हाँ, हाँ, But बहुत बार हो चुका है. yeah, तो लाइक तो देन एक थोड़ी एक बेस एक्सपेक्टेशन भी आ जाती है ना कि लाइक yeah, yeah. हाँ. Like Cry Babies में जैसे we were ओ ले है ना. पागलपन छा रहा था वो तो Yeah, लाइक. yeah. We Yes. completely lost it No. there. Yeah, so even if we don't compare, like Yeah, which is natural too, क्योंकि yeah. but फिर भी अगर हाँ, मतलब like it's lukewarm, I'd say. I feel like this reminded me of how much a rhyme cost में जो second song था. I'm just checking the name of it. Okay. Snake Bites. Very Hmm. sinister-ish beat and vibe overall through it, and even his delivery in that. And I just checked, उसमें भी Retro Blood है producer. So the vibe is very Similar. reminiscent. Yeah. And even the way he is spitting the verses is very controlled, sinister. It's very Godfather, calm, rage space say. But what he's saying, like in this song, I feel like he's flexing more his technical skills in terms of his rhymes and flows, especially that last end bit of it, the last 1/3 of the song, where the flow and the thing happened. But as an idea, I really like it though. It's Yeah. something different. Yeah. It's something that's been attempted, which is like, I mean, who hasn't grown up on Amitabh Bachchan films? Yeah, Right? I It know, is like exactly. one thing, जो generationally, cross generation common है. Like Yeah. it doesn't matter कौन सी generation से हो आप, you've just grown up on Amitabh Bachchan films. For sure. So, so I think that, and to put that idea into like a video, so the idea is really good. And the whole concept के, सारी फिल्मों के, movie names भी So डालेंगे. references और डालेंगे. उसके references डालेंगे. Yeah. So all that was like fun. That was a nice one. Yeah. Yeah. So this is what I was thinking, because even when we first started listening to Karma, all his older songs, there would be one say ज़्यादा Bollywood reference and old retro sort of movies का, referencing going on over there. So I feel that कीड़ा in him has come out fully in the song, especially वो अमिताभ बच्चन का कीड़ा तो हम सब में है. And when I saw the name of the track and I heard that this is, I was like, oh my god, favorite all time. Like literally the only Bollywood person I follow now is Amitabh Bachchan, because I unfollowed all of them in 2020 and I physically could not hit unfollow on Amitabh Bachchan because heart is connected. So he'll always be, Bachchan Saab, the one. And so I feel like this song, he's probably got all that Amitabhness in him from childhood that he needed to take out, which he's done very nicely. The verses, वहाँ पे सब popular dialogues भी use Weave-in हो किए गए, हैं, weave in हो गए verse में, और movie names भी weave in हो गए, और kind But of like, I really feel, because we've heard Karma being sarcastic and hilariously sarcastic. that was not So there. I do feel that could have been added in this, especially Yeah. because, the parts where he's talking about कि उनके dialogue and उनके, like, there are certain parts where he's mentioned stuff like that. So उन जगहों पे, I think that aspect of Amitabh Bachchan could have come like, out. the expectation that comes that, okay, Karma doing a theme, Amitabh Bachchan, like, Amitabh. So then one thinks कि यार कुछ और होगा. There'll be some fun element to it. There'll be some crazy side coming out, Yeah. और वो नहीं आई. या फिल्मी, या full on फिल्मी भी आ जाती, that would have been phenomenal. Like, आवाज में ही. Video ठीक है. Like, that's also a new thing कि AI try कर रहे हैं. So that's also like, an interesting sidestep on the whole thing. तो वो अच्छा है. Like, new things are being attempted, which, like, kudos to that. But I feel like sonically थोड़ा और spunk होना था, थोड़ा और funny होना था, थोड़ा और अमिताभ बच्चन होना था. Yeah. क्यों नहीं था? The opposite of that is, I was not trying to do an Amitabh Bachchan song or a filmy song. I was just going off of the vibe the man gives off and use that in a sort of शहनशाह के कपड़े पहन के अगर आप आ जाओगे स्क्रीन पे, शहनशाह is the boss of drama. तो अगर आप वो दिखा रहे हो तो आई एम सॉरी, वो you can't underplay it then. तो आपने दिखा दिया ना, शहनशाह आ गया वहां पे, तो like I get it. वो white suit I hear, भी. yeah.
I'm ये just भी trying to personal think angst कि निकल रही I है. know, no, हाँ, you're I'm giving with you benefit of on doubt. it. I'm not even benefit of that. I'm trying to think from the intent perspective of it. When you're writing a song like this, you might be in a different frame of mind, and then you throw in those references like he's done in older songs. Fair enough. इसमें because the title is such, you've हाँ. titled it Amitabh. That's why we are getting a bit more expectation from the title. If he Yeah. had named the song something else, like let me see a line in the lyrics. If he has said माँ भी खुश है, for example, if that was the title of the song, we would not have any such expectations. We would be like, okay, हाँ. एक अमिताभ बच्चन का डायलॉग से ये टाइटल हो गया गाने का, you know. Correct, correct. So anyway, the titling of it is where it throws us off, and then it's justified our expectation from it, the one that you are so thinking about. So I'm just going to go over the lyrics because बहुत dialogues और वो सब थे. So let's talk. कैसे भी इसने बोला the one that you're very only I am, you're not. No, You're I'm very also. happy I'm with also. it. I'm also. No, I feel like the spunk side of Amitabh could have come out because Karma already has that in him. He already has the sarcasm. Exactly my point. So you know, it's like या तो कर्मा capable नहीं होता उस चीज का और हमें पता ना होता कि अच्छा Yeah. उसको तो नहीं but we've seen him do that before. Yeah. So I get it. I feel like what you're feeling is थोड़ा half baked लग रहा है, you know, हाँ, in the sense of it. So ठीक है, let's see. अमिताभ आज भी फेंके हुए पैसे उठाता नहीं अमिताभ. That is very earwormy, that bit. And with all these dialogues, it was almost like all the common personality traits which probably Karma feels with Amitabh Bachchan or his different characters. It's almost like he's handpicked those dialogues and those sides of it to, you know, express. Yeah, exactly. As soon as it started with this line, I was like, "Ooh, this is gonna be nice." And then badakat, badi baat. I liked where it was going. भाई तेरा शहनशाह है अमिताभ जया रेखा खास दोनों खड़ी पास तेरे this had to come. तेरे गाने मजाक, it's a funny part. बता दे कैसे करोड़पति बनेगा. See this part, के तेरे गाने मजाक funny part. तो you know उसमें that thing in the voice, this is the part which I was like, अरे हाँ. Yeah, I get it. Verse 1, मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, शौहरत है, talent है. So that dialogue happens. इन सब से मिलने की मोहलत नहीं है. खुश रहती माँ भी है, खुश है तबीयत. पता क्या है ये, गर दौलत नहीं है. Bars have happened. वाह. तो है और कुछ है ही नहीं. एक शादी को राजी है, प्लेट में वसाबी है. This I did not understand. प्लेट में वसाबी है मतलब it's I don't know. I'm looking at it is like Toshan के like हम वसाबी खाते हैं, ऐसे sushi वसाबी. like हम sushi खा रहे हैं and all. Yeah, Sushi is like, considered okay. एक शादी को राजी है, प्लेट में वसाबी है, कर्मा है सेम पर वॉलेट नहीं है. तू 4 लेके आने या 400 के साथ घर पे 4 आने. हाँ 4 आने गाना है ना उसमें. Shit, no, it's not I think here what it means is that थोड़े पैसे या ज्यादा पैसे, like 4 आने is nothing, right? हाँ, okay. You mean like if there's a cross reference? Yeah, okay. something. Anyway, घर पे खाने खिलाने की प्रॉब्लम नहीं है. Then the when I'm sorry, this is like when Jojo has to think of something ना उसको याद नहीं आ रहा था, suddenly like she's literally like tapping her head कि कुछ तो याद आएगा कुछ. That was very cute. Sorry, continue. I think I get it from Tom and Jerry. So watch Tom and Jerry growing up. Okay, verse 2. हाँ बड़ा करोड़पति तू. Don't worry, I'm trying to get that old money, dude. This I liked. ये जलते मैं चल पड़ा अग्निपथ. ये प्रतिशोध की आग में जा जल. ओके ये शॉट ले पर मिसफायर मारे. रिप्ले नहीं मिलते तो रिप्लाई मांगे. इस होप में जीते कि मिले इनको जवाब. ऑप डिप्रेस्ड खाली बैठे डिस्ट्रैक्ट्स मांगे. मैन रिस्पेक्ट मांगे जो कि मिलती है. इन्हें खुद को पता है ये गिल्टी है. इन्हें खुद को पता है ये कहाँ खड़े होते. इन्हें खुद पता जगह क्यों नहीं मिलती है. खैर अमिताभ आज भी फेंके हुए. The way he said फेंके हुए, you know, the way he stretched that word. Like literally आप फेंक रहे हो वैसे वाला. फेंके हुए पैसे. Yeah, and every time the hook came in, he said it the same way. फेंके हुए पैसे. That was nicely done. मेरा जो पूरा वर्स खत्म हुआ, मुझे उसका एंड में वो समझ नहीं आया कि लाइक उसका कोरिलेशन क्या था टू फेंके हुए पैसे. डायलॉग है अभी खत्म नहीं हुआ है. अच्छा इट्स गोइंग ऑन. खैर अमिताभ आज भी फेंके हुए पैसे उठाता नहीं मैं. मेरे बाप दादा खुददार उनसे मिला है. सोच मिलती नहीं हाथ भी मिलाता नहीं. हाथ जोड़ करता हूँ इस काम को सलाम. पर हाथ जोड़ पैसे कमाता नहीं मैं. मुझे सबका हिसाब मेरी क्या है जगह. तेरे टॉप 10 में आने को गाता नहीं. जाने मुझको कितनों ने कितनी सलाहें दी. बोला मुझे लिखना ये गाना सब है बेकार. गाने इन्हें रोंद के चले गए मेरे नाइकी. गाने इनके सोल पे छपे. सोल एंड सोल छपे हुए जैसे अडिडास. खैर मिल जाना बैठ जाना कभी. दिस होल सेक्शन द वे द फ्लो वाज इनसेन. मिल जाना बैठ जाना कभी पास. तोड़ी जंजीर दीवार करी पार.
करूँ फ्राइडे को ड्रॉप, करूँ शनिवार. कभी शनिवार, नाइस, ये वाला मेरे को अच्छा लगा. Yeah. It's the way he put the whole शनिवार and the whole, yeah. या छुट्टी बैठाता मैं इन्हें रविवार. रवि, यू रिमेम्बर हिज नेम इन सत्ते पे सत्ता. अफसोस ब्रो वही है तू वही का, वो ब्रो गो स्लो मशवरा सभी का, लो ब्रो कोड लो ब्रो लो टकीला, ना नो ब्रो करने नहीं नशे साथ, तोड़ फोड़ स्कोर बोर्ड तोड़ा सभी का, लोट पोट कस ड्रॉप ब्रो ड्रॉप तेरा फनी था, तू कोट वोट नहीं बकरा तू बली का, तू तो दोस्त रोज गोस्ट नोचते हैं सभी साथ. गोस्ट गोस्ट गोश्त, गोश्त, सॉरी यहाँ पे गोश्त, गोश्त लिखा है. तो गोश्त. दोस्त रोज गोश्त नोचते हैं सभी साथ, लाइक सब बैठ के नॉनवेज खाते हैं. Yes, गोश्त, not गोश्त. हाँ इधर गोस्ट लिखा है. ओके कोरस, अमिताभ जरा बता दे कैसे करोड़पति बनेगा. So yes, I feel like थोड़ा कुछ the thing, the zing was missing little bit. थोड़ा Yes. वैसा delivery था, बहुत Godfather like, and reminded me of Snake Bites a lot. And then of course we have the producer in common, so can see why. But it's a good drop, I feel, because he's just flexing flows and skills here. Yeah. Rhymes and Yeah, flows. and the theme of the video and the thought behind it is also interesting. So all of it is like, you know, it'll definitely grab attention, right? Like initially, it's like, okay, ये क्या है? चलो देखते हैं. And then everyone like, okay, but उसके लिए अमिताभ का नाम ही काफी है. I'm sorry, वही. I'm gonna be a little mean. I didn't like this visualizer at all. I feel like बहुत, अब आप अमिताभ को लेके बना रहे हैं तो हमारे इमोशंस बहुत अटैच्ड हैं उस इमेज से. अब आप ऐसा finally, इतनी देर से मैं और क्या बोल रही हूँ? Yes. I was waiting for the end to like give my हाँ, full to like, okay, full give emotion proper, into this, अच्छा. but like I feel like come on, you can do better than this for a visualizer. I see in the first scene वो land होता है, पीछे एक दीवार या शोले, some poster is there, and he's walking in a Shahenshah outfit. Correct. But then when you see this image of this human walking, Yeah. you do not think Amitabh. Nowhere close is Yeah, you look at Karma wearing Amitabh's clothes. That's how. I mean, I Shahenshah. didn't even think it's Karma wearing Amitabh's clothes, because I didn't even feel like that looks like Karma's face. It doesn't to me. Karma has a stubble, a beard, like he has a different look. Okay, to me, so it looked like Karma. So I I didn't. looked at it and I was like, Karma wearing this thing. So I was like, okay. मेरे को बिल्कुल नहीं. और कर्मा की खुद की दाढ़ी है, शहनशाह की भी थी, तो वो रख लेते. AI ने कहा चलो मुझे थोड़ा स्टाइलिंग करने दो. AI ने थोड़ा चेंज कर दिया. Why? Clean shaven शहनशाह नहीं चाहिए हमको. I know, और वो सफेद लटका है. Excuse me. Yeah, clean shaven वैसे भी we अच्छा, don't want anyone. हम बहुत ही critical हो रहे हैं अब उससे कि exact क्यों नहीं है. No, exact होना भी नहीं चाहिए, but to me it doesn't look like Karma, it doesn't look like Amitabh, even if the face and the thing doesn't the body proportions. Yeah. That is the first thing that stands out. Are the basic. उसके beyond बढ़ ही नहीं पाते क्योंकि वहीं पे ना अटक जाते हैं. Yes. And ऐसा होता है sometimes when something, it is such a drastic first impression, Yeah. that you're unable, at least I was unable to move forward. Yeah. Like, you know. Yeah. बहुत strange था. So ठीक है, the strangeness continued till the end. My wish for a height growth spot did not happen. But anyway, I like in that white suit thing, I was finding him more like Shashi Kapoor rather than Amitabh Bachchan. So I was like, wait a minute, यहाँ पे किसको क्या, like ये कौन सी film से, ये क्या है, like, you know. So yeah. So listen, we have nothing against the graphics team, but ऐसे ही just मजे रहते हैं. maybe they didn't grow up on Amitabh Bachchan. I'm just, anyway, they would have been living under a rock, but it's a possibility. ठीक है, whatever. I like the end credits, the way it's written with Amitabh, Karma. ये admin में घुस गई. हाँ, कि admin वो बहुत retro style में लिखा तरीका है. था. That was nice. Yes. That I liked. Yes. Anyways, so that's that. I feel like this one's hook is very earwormy, and I really like the flows especially towards the end of the track. But expectations from Karma are always super high. Yeah. So थोड़ा सा we want to see that fun side of it. थोड़ा ही वाला disappointing हो गया basically. Yeah, थोड़ा सा. Chalo, on that note, let us know what you thought of it, and let us know what you thought of the visualizer also. On that note, take care of yourselves. We'll see you the next. By the way, tell me what's your favorite Amitabh Bachchan movie or dialogue in the comments. You also put. I'll also put. I'll also put. Done. I will do that. Chalo, take care of yourselves. Live long and prosper. Bye.
अमिताभ आज भी फेंके वे पैसे उठाता नहीं अमिताभ थोड़ा कर बड़ी बात भाई तेरा शहंशाह है अमिताभ 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 जहर का खास दोनों खड़ी पास तेरे गाने मजाक इट्स अ फनी पार्ट बता दे कैसे करोड़पति बने